Hello, my dear CA final students. So this is a very crisp exam-oriented video for the most painful topic जो आपको तकलीफ देता है, that is digital auditing and assurance. Now let me be very clear. I have created these notes. ये जो notes है for the new syllabus CA final audit, I have uploaded it on Telegram also. Okay, and the main thing is your self-study, because you have to sit, look at the code words. जो भी मैंने हेडिंग दिया है दैट पर्टिकुलर हेडिंग इज द क्वेश्चन एंड उसके हिसाब से आंसर है. ओके, बट आई विल क्विकली टेक यू थ्रू द नोट्स. आई विल टेक यू थ्रू द नोट्स सो दैट आपको पता चले एग्जैक्टली करना क्या है. एंड द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन इज दैट वेर एवर देर आर मॉड्यूल क्वेश्चंस, जो ICAI मॉड्यूल क्वेश्चंस है, देर आई हैव सर्कल्ड ऐसा M करके. ओके, so you will also get an idea about the kind of questions that they can ask from here. Okay, so we'll be very quick with this. After this video is over, आपको एक 30-40 minutes बैठ के इसको पूरा बाय हार्ट कर लेना है. Okay, so what is digital audit? First of all, when you are looking at this particular topic, imagine कि आप कोई बैंक ऑडिट कर रहे हो, या imagine you're auditing Amazon, imagine you're auditing Flipkart. All right, so such things if you imagine, तो आपको अच्छे से समझेगा ये क्या चल रहा है. बैंक ऑडिट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू इमेजिन. ना बैंक में कितना सारा IT सिस्टम्स यूज होता है. सो बेसिकली यू आर गोइंग टू डिसाइड एज एन ऑडिटर कि क्या मैं इनके सिस्टम पे भरोसा करूं. कैन आई ट्रस्ट देयर सिस्टम्स? ऑलराइट, सो प्लेसिंग अश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ IT सिस्टम. वन मोर टाइम, प्लेसिंग अश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ IT सिस्टम इंप्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट? की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट, अब यहाँ पे मैंने कोड वर्ड दिया है दासास. ओके, ऐसा एक और क्वेश्चन है. You see fifth point, key features or advantages of auditing digitally. So ये भी key features वाला है, and that second point is also key features. So both of them you will by heart and mix and match करके आंसर लिख सकते हो. Okay, so DASAS, digital auditing will the whole digital environment helps in decision making. सबको decision making में help करता है, to the entity also, to the auditor also. Auditee यानी जो client है, client को encourage करता है to embrace technological developments. Then savings, it will increase the savings of time, cost and stuff. Auditor को improve का help करेगा in improving the quality of audit opinion, and it will help entity as well as auditor to standardize everything. Okay, so key features थोड़ा advantages style में ही है. So key features में ये DASAS, and again if I go to fifth point, key features, so if you see rat is efficient than human. Okay, so it will help in risk assessment by the auditor. जब auditor पूरी understanding लेता है तब उसको help करेगा. Automation and ease कर देता है, quality of audit को increase कर देता है. This particular full answer is from auditor's point of view. Okay, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देगा, पता चलेगा किसने क्या काम किया, who has done which kind of work. Alright, and efficiency increases, error reduces, and obviously human dependency decreases. So if you're asked a question on key features, थोड़ा मॉड्यूल में भी confusion है, they have given two paragraphs. So if you're asked a question on key features, second and fifth point का mix and match होगा. So DASAS and RAT is efficient than human. Alright, if you're able to write 3-4 point also, it is good. First of all, don't take pressure of by hearting all the points. Digital audit वाले chapter में one thing is very clear, that you should know something of everything, because 3 to 6 marks का weightage है as per ICAI weightage. So you should be little at least average in this particular topic. Okay, advantages of digital audit, if you see the code word EQCR analytics, सबसे बढ़िया advantage क्या है? It will increase efficiency, effectiveness. ये तो अभी you can write with the BCom English also. Alright, audit का quality increase हो जाता है, cost कम हो जाता है, risk assessment improve हो जाता है, and it will improve the analytical capabilities also. So please be careful. Features second and fifth point of my notes, and advantages के लिए third point of digital auditing. Now considerations and challenges of digital audit. जब entity भी digital systems implement करता है, when the client is implementing, suppose a bank audit you are doing, the bank is implementing digital systems. Alright, then client side, पहले तो client side के angles है, entity audit के side के angles है. There are some important things that they need to take care of. Alright, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनका उनको ध्यान रखना है. सो द कोड वर्ड इज स्टैंडर्ड कैट चैलेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोमेशन करने से पहले दे शुड स्टैंडर्डाइज एवरीथिंग, दैट ओके ये प्रोसेस चाहिए उनको, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स. ऑलराइट, देन व्हेनेवर दे आर चेंजिंग, ऑलराइट, दे नीड टू डू इट प्रॉपरली. अगर कोई सिस्टम चेंज कर रहे हैं तो, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द पीपल, चेंज द सिस्टम. देन दे नीड टू डिफाइन, क्लाइंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑटोमेशन से क्या बेनिफिट चाहिए उनको. ऑलराइट, जैसा भी मेरा एडमिशंस लेते हो थ्रू द ऐप एंड वेबसाइट, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ माय ऑटोमेशन. ऑलराइट, सो व्हाट इज द बेनिफिट दैट दे वांट फ्रॉम ऑटोमेशन? टू रिड्यूस द ह्यूमन साइड, टू रिड्यूस द कॉस्ट, क्या बेनिफिट क्या चाहिए. ऑलराइट, देन कौन से प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है. जैसे मेरा डिलीवरी का जो पूरा प्रोसेस है टू द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को बुक डिलीवर होता है, दैट यू कैन नॉट ऑटोमेट कंप्लीटली. ऑलराइट, थोड़ा मैनुअल होगा ही, पर एडमिशन का प्रोसेस यू कैन ऑटोमेट. सो टारगेट एंड सिलेक्ट द राइट प्रोसेसेस. देन
जब आप ऑटोमेशन करने वाले हो, ये ना, थिंक लाइक ओनर, बिजनेस ओनर एंड स्टफ, सो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, ऑलराइट, एंड वो चैलेंजेस को यू शुड एनालाइज एंड सॉल्व देम. सर ये सबको सर आर वी सपोज टू राइट इन ग्रेट डिटेल्स? सी दीज आर द मेन कीवर्ड्स जिसको वो लोग टिक करके मार्क्स देंगे. ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज देयर इन फाइनल सीए, मैंने इसका का सब्जेक्ट दिया हुआ है, alright, and I used to prepare it in this manner only, and I have scored 61 marks in ISCA. In fact, I scored exemption in all my theory subjects, alright. I missed my rank by 8 marks, that's a different thing. Okay, now ऑडिटर के साइड के अगर से देखें हम, ऑडिटर के साइड के, तो ऑडिटर को कौन सी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑलराइट. ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग. ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस दैट एंड स्टफ, ऑलराइट, उसका क्या इंपैक्ट आएगा ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. देन अगर कोई न्यू प्रोसेस आता है या न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ऑलराइट, सो न्यू एक्टिविटी आती है, न्यू प्रोसेस आता है, ऑलराइट, इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कुछ नई चीज आती है, एक तो इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, दूसरा न्यू प्रोसेस बाय द एंटिटी, ऑलराइट, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा. एंड देन अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस होते हैं, नया एकदम नया एक्टिविटी नहीं आया बट एग्जिस्टिंग प्रोसेस में चेंजेस हो गए, जैसे इन्वेंट्री वॉज अर्लियर डन मैन्युअली, अभी ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा है, सो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में चेंजेस हो रहे हैं, तो ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर दैट. सर ये कब लिखेंगे सर हम? सर व्हेन आर वी गोइंग टू राइट दिस, ऑलराइट, व्हेन द क्वेश्चन इज ऑन challenges of digital audit. और ये client side के जो challenges है, alright, this particular question is a module question, as you can see M over there, and key features, advantages of digital audit was also module question. देखो आप M पे ध्यान देना, जो जो module question है वो, at least those questions should be at the tip of your tongue. Okay, then sixth point, considerations in auditing digital. ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन को बाय हार्ट करो, यू नो, कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली. फ्यू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट टू आस्क एंड आंसर एट ऑल स्टेजेस ऑफ टेक जर्नी, एंड द कोड वर्ड इज पुट. सबसे पहले तो यू आर एन ऑडिटर, ऑडिटर के एंगल से सोचो, यू वांट टू ऑडिट थ्रू यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, करेक्ट. देन इन दैट केस पहले तो प्रॉब्लम्स को डिफाइन करो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं ऑडिट में. बहुत ज्यादा क्लरिकल वर्क हो रहा है, ह्यूमन वर्क हो रहा है, सो डिफाइन योर प्रॉब्लम्स, ऑलराइट. That okay, these are the things that you want to make easier. Then upskill your employees and articles and stuff, all right, the great articles, train karo unko that how to use technology, all right. And then which technology do you want, wo bhi to decide karo. So put, okay, these are the considerations in auditing digitally. So मैंने क्या किया है, जो उनके keywords है, the main keywords I have taken it, all right, and I have trimmed wherever the necessary was there, wherever it was necessary to trim it, थोड़ा थोड़ा cut किया है, all right, but main keywords are there to get you the marks, okay. And I think at this point of time during exams you need the keywords only, okay. Now understanding the IT environment, auditor should obtain understanding of automated environment. Imagine you are conducting audit of a bank, अब बैंक का पूरा automated environment है, correct. सो उसका एक अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा आपको, ओके. सो ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट शुड इंक्लूड व्हाट? शुड इंक्लूड पैरिस. पहले तो बैंक कौन सी पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है, बैंक कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, विच एप्लीकेशंस आर बीइंग यूज्ड बाय द बैंक, ऑलराइट. देन व्हाटएवर दे आर डूइंग, उसमें रिस्क क्या है, कंट्रोल्स क्या है, ओके. उनका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन से एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग, ऑलराइट, व्हाट इज द सर्वर, वेयर देयर सर्वर इज, ऑल ऑफ दैट. एंड देन organization structure, who is the junior, who is the senior, IT का head कौन है, right, all of that, okay. So auditors understanding of automated environment, Paris. P for policies procedures, A for application, R for risk involved, I for infrastructure of IT and its components, and S for structure of the organization. As I told you कि आपको थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको बाय हार्ट करके देन ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. I am just giving you a complete go through of the notes, okay. Then key areas for an auditor to understand IT environment. सर यहाँ पे आपने कुछ एग्जांपल्स देकर NE2 पहले क्या तो क्या लिखा है. दिस वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द ओल्ड कोर्स अटेम्प्ट. जैसे कि ये सिस्टम है जो एंटिटी यूज कर रही है, ओके. नाउ इन होटल इंडस्ट्री KOTS, किचन ऑर्डर टिकट्स, जो आप ऑर्डर प्लेस करते हो फोन से, रूम से, ऑलराइट. सो KOTS करके ऐसा एक स्लिप निकलता है, वो जो ऑर्डर प्लेस होता है. एंड देन दैट ऑर्डर, यू नो, डोमिनोज वगैरह में भी आप देखते हो स्क्रीन पे ऑर्डर्स देखते हो. सो दैट इज KOTS सिस्टम, ओके. So KOTS system is used for restaurant and kitchen orders. Then there is a database that they use, operating system, network and server and storage. वो सब कुछ याद नहीं रहा, ठीक है, but at least एक दो सिस्टम आपको याद रहना चाहिए, because these two examples, you know, can be asked. NE2 करके ऐसा examples. Okay. Now, key areas for an auditor to understand IT environment. Key areas for an auditor to understand IT environment. Sir, ये भी understand IT environment था. There is a problem in the module. Two times they have repeated things and with different answers. And ये भी key areas for auditor to understand the IT environment है. Okay. So now
sir, which answer to write? See, if they ask you about understanding of automated environment, then you'll have to write Paris. ये थोड़ा by heart करना पड़ेगा. But if they ask you key areas for an auditor to understand the IT environment, which is itself a module question, all right, then you have to write this. So if you by heart this particular point, then also it is fine. Control the flow of complex technologies. अभी मैं बैंक को अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहा हूँ. So I want to know, ए बैंक मैनुअल कंट्रोल्स कहाँ है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कहाँ है? ऑलराइट, कंट्रोल. What is the flow of transaction? Hello, कोई डिपॉजिट, if someone opens up a deposit account, then how it flows, start से लेके end तक. Flow of transaction, processing of information. Obviously, I will focus on material items. जो टेक्नोलॉजी हो कितना कॉम्प्लेक्स और कितना सिंपल है, ऑलराइट, कितना, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑटोमेशन, complexity of IT environment, and exactly कौन सा applications they are using. Alright, so technology. So control the flow of complex technologies. These are the points that you need to by heart when they talk about key areas for an auditor to understand IT environment. ये एक ही PDF है ना, just go through that 7-8 times. So automatically you will develop the grip and you are going to get your 3-6 marks. Alright, it's going to be very easy question, don't worry. Risk arising from usage of IT, मॉड्यूल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स कैन इजीली राइट ऑन देयर ओन. आईटी की वजह से क्या रिस्क है? अनऑथराइज एक्सेस का रिस्क है, डेटा लॉस का रिस्क है, डेटा सिक्योरिटी का रिस्क है, मैनुअल इंटरवेंशन इफ इट इज डन इम्प्रॉपरली, कोई मैनुअली अल्टर कर दे उसका रिस्क है. ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी 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 इजी आंसर. ओके, नाउ दिस इज समथिंग दैट इज टेक्निकल, प्लीज स्टे फोकस्ड. IT dependencies impacting the audit. So now what is this? Tell me, as an auditor, आप information technology पे क्यों dependent हो गए? Why you are dependent on information technology? Because nowadays in all the organizations, calculations IT के through हो रहे हैं, processes IT के through हो रहे हैं. So that is your dependency. All right. So please understand. They will ask you these 5 dependencies. 5 dependencies है. All right. Secure CA inter report. First of all, पूरा जो security है, segregation of duties है, who can access which application, all of that is defined by technology now. All right. Then CA inter. C for calculations are performed by IT system like invoicing, calculation, discounting and all of that. Then सब जगह पे automated controls आ चुके हैं. And that is why auditor is dependent on this. All right. Then interfaces, यानी how two systems are connected with each other. All right. तो वो भी वन सिस्टम से दूसरा सिस्टम जो कनेक्शन है, दैट इज ऑल्सो थ्रू आईटी सिस्टम. पहले सब मैनुअल होता था, नाउ इट इज थ्रू आईटी सिस्टम. ओके. देन सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स यूज होते हैं. सो इफ अ बैंक मैनेजर इज जनरेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम कि किसको कितना लोन दिया है, एक्सेस किसका दिया है, देन द बैंक मैनेजर टेक्स एक्शन. सो द ह्यूमंस आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द report generated from the system. All right, so that is secure CA inter report. 5 IT dependencies impacting the audit. Okay, then इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इंटरनल कंट्रोल्स सेटअप होता है, द इंटरनल कंट्रोल्स विच आर सेटअप इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऑलराइट, 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं विच यू हैव स्टडीड एट इंटर सीए लेवल. वन इज ऑन सारी एप्लीकेशंस पे एक जनरल कंट्रोल, लाइक डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल, सर्वर कंट्रोल. ऑलराइट, दीज आर ऑल जनरल कंट्रोल्स. ओके. देन every single application has its own set of control. जैसे सैलरी का एप्लीकेशन will have its own set of control, परचेस वाला एप्लीकेशन will have its own set of control. That is called as application based control. देन यहां से जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, बेस्ड अपॉन दैट ह्यूमन टेक्स एन एक्शन. सो ह्यूमन इज डिपेंडेंट अपॉन आईटी, सो दैट इज आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल. आई रिपीट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. वन इज जनरल आईटी कंट्रोल अक्रॉस द एंटायर एंटिटी एप्लीकेशंस. Second is application based control, and which is their individual application has its own control. And third is application के ऊपर dependent होता है human, so IT dependent manual controls. Okay. However, in final CA module they are just talking about ITGC, that is information technology general controls. अब imagine करो कि आप बैंक audit कर रहे हो, कोई it's a very big company that you're auditing. First of all, ऐसी जो companies होती है, when कोई they have a IT policy कि कभी भी कोई application if they purchase it or develop it, alright, for that they will have IT policy. Then across all the applications किसको क्या access होना चाहिए उसकी policy होगी. Then across all the applications अगर कोई changes होते हैं in the system, alright, तो for that also they will have a proper policy. Alright. Across all the applications, जो भी application से data collect हो रहा है, where to store that data, backup of that data, for that also they will have controls. Correct. So IT general controls are divided into 3. Change, data, access. Actually there are many, but they have given 3. Change, data, access. One is changes. अगर प्रोग्राम में कोई भी changes करने हैं, so imagine a very big company like Reliance and stuff, अगर उनकी जितने भी applications है, if they want to change it, then they will have to ensure that the modified systems continue to meet the objective. Alright.
ये उनका ऑब्जेक्टिव है. दैट इज वाई दे विल हैव अ चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी, दे विल टेस्ट द चेंजेस, ऑलराइट. दे विल एक डेमो टेस्टिंग करेंगे बिफोर दे एक्चुअली इंप्लीमेंट द चेंज, ऑलराइट. सो दीज आर द कंट्रोल्स. ओके, देन डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, यानी जितना भी एप्लीकेशन है उसमें से जितना भी डेटा कलेक्ट होता है, ऑल द डेटा दैट इज कलेक्टेड थ्रू द एप्लीकेशंस, ऑलराइट, द डेटा दैट इज स्टोर्ड, बैक्ड अप, रिस्टोरेशन, ऑलराइट, server management, that is called as data center and network operations, which I have written over here. Then across all the applications the access needs to be defined, that there should be segregation of duties, the person having accounts access should not have the access to assets, all right, there should be security policy. Then if the employees leave the organization, agar koi employees organization chhod ke jate hain to uska access remove karna hai, all right, all of these points. Okay, so information technology general controls. Now there is one big discussion about cyber risk. I repeat, there is one big discussion about cyber risk. Now there are three types of discussion over there. एक assessing cyber risk, दूसरा cyber security framework, and third control considerations for cyber risk. All right, this assessing cyber risk is one of their favorite. Okay, I'll be very quick with this. They are saying that cyber की वजह से, internet की वजह से, because of the applications and stuff, there are lots of risk. And there can be cyber attacks. Now in 21st century, cyber attack word is very normal. All right, students understand कि cyber attack में कुछ तो सर बोलेंगे अभी hacking का. Okay, so now cyber attack में they have defined all of these attacks. I'll be very quick with this. First is malware. But ये malware, phishing and spoofing के लिए detailed discussion है. For that you will see on the next page I have given the discussion. Okay. So एक काम करता हूँ, जो छोटे छोटे small first I will explain. Denial of service attack, यानी कि कोई भी सिस्टम के नेटवर्क को, एनी नेटवर्क ऑफ द सिस्टम को इतना फ्लड कर दो, फ्लड इट सो मच दैट इट हैंग्स, ऑलराइट, सो इट विल डिसरप्ट द ऑपरेशंस. प्लीज एंश्योर दैट दिस लाइन यू आर रिमेंबरिंग सो दैट यू आर एबल टू स्कोर मार्क. आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, टू स्टील, चुरा लेना आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड. आई विल स्टील योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड आई विल यूज योर आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी बेस्ड अटैक. इनसाइडर थ्रेट, वेर करंट एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉय इज पोजिंग डेंजर बिकॉज उनके पास एक्सेस है. DNS tunneling. Now what is DNS tunneling? For example, मेरी वेबसाइट है theauditacademy.com. Alright. Now obviously that theauditacademy.com when I am accessing, तो वो वेबसाइट जो होता है कंटिन्यूसली बाहर की वेबसाइट से इंटरेक्ट करता रहता है. Now the hacker will create a tunnel, will create a space, alright, to get into your system through that particular website or through that particular system. कोई भी application के अंदर they will create a space. So what they will do, that hacker what he will do, he will transfer data and code within the network using the domain name system query. So whatever my domain is generating queries and interacting, उसके through they will enter. All right. Then IoT based attacks, Internet of Things. What is Internet of Things? Today Amazon Alexa, Google Home, washing machine, AC, all of this you connect with Wi-Fi. All right, so that is called as Internet of Things. Watch. All right, so Internet of Things. Okay, and targeting that particular device and getting the access to that particular person. All right, that is Internet of Things. Okay, अब ये explain करता हूँ malware, phishing and spoofing. Malware is nothing but I want to introduce some program or code. आपके system के अंदर I want to introduce a program or code, alright, to harm a computer network or server. Okay. Now there are 4 types of malware. MRF Trojan, that is my code word over here. M for mobile malware. So basically I will target mobile devices through downloads. Download this, download this, download this. Then ransomware. I will put a program in your system जिसके थ्रू मैं आपकी पूरी सिस्टम को लॉक कर दूंगा. I will encrypt your data and if you want to decrypt, that means unlock your data, you will have to pay me some money. Okay? Fileless malware. देखो ये मोबाइल मार्वेल में आई वॉन्ट पीपल टू डाउनलोड. रैंसमवेयर में ऑल्सो आई विल नीड द एक्सेस टू द सिस्टम टू एनक्रिप्ट इट. फाइललेस मार्वेयर में आई विल यूज द नेटिव सिस्टम, यानी जो सिस्टम के अंदर, जो ये सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर है, राइट, दोस सॉफ्टवेयर ओनली आई विल यूज टू जनरेट अ कोड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. सो मुझे कोई फाइल इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो आई विल यूज द टूल्स बिल्ट इनटू अ सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ साइबर अटैक विदाउट एनी फाइल डाउनलोड. एंड ट्रोजन मींस डुप्लीकेट, डिस्गाइज. ऑलराइट, ओके. सो अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट, आपको लगता है कि ये लीगल है, वैलिड है, ऑलराइट, ऑथेंटिक है, बट एक्चुअली इट कुड बी अ साइबर अटैक. सो अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट बट इट इज डिस्गाइज्ड. एग्जांपल फ्री डाउनलोड्स एंड स्टफ. ओके, दैट इज ट्रोजन. सो प्लीज बी केयरफुल. 4 टाइप्स ऑफ मालवेयर. नाउ फिशिंग. Phishing means I am myself not inserting a data into your system,
I am doing something with you which makes you feel that you should share the data with me. All right. So look at this. Enticing means making a victim to share sensitive information using email, SMS, phone, social media, etc. So अब ये phishing के भी types है. VWS2. All right. Wishing, V for voice, phone calls के through. So you will get a phone call and then you share the information. All right. वेलिंग बिग एग्जीक्यूटिव्स वगैरह के सिस्टम्स को, एग्जीक्यूटिव्स वगैरह को फोर्स करना दैट यू शेयर द डेटा विथ मी थ्रू सोशल मीडिया इंटरेक्शंस और नो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज. स्मिशिंग, एस फॉर SMS. All right. So through messages, OTP share karo, OTP. All right. Okay. Spear phishing is targeting specific individuals through email. All right. First, targeting specific individuals. Okay. So just go through this. This is interesting. Spoofing means again duplicate. What is spoof? www.mszoni.com. All right. So that is called as domain spoofing. Domain spoofing. www.mszoni.com. All right. So you feel that I'm on Amazon itself. It will look like Amazon, but it is not Amazon. All right. So impersonating known business or person through fake website. Email spoofing. आपको ऐसा फील कराऊंगा as if your boss has emailed you and you will give a reply. Okay. So target business by using emails with forced sender addresses. So that is spoofing. I hope I am clear with this. If there are any doubts or so, then in that case you can use this comment section of this particular video and I will share the links where you can get the practical examples if there is any problem. All right. But as of now, just remember these keywords. तो exam में आपका काम हो जाएगा. Okay. So all of these attacks are also done. Now, they are saying that there are 3 stages of cyber risk assessment. 3 stages of cyber risk. अरे कोई भी risk में first you have to find out the risk. All right. Then you have to see the impact of that risk. All right. Analyzing the risk, and then you have to manage the risk. So अगर वो लोग ने बोला 3 stages of cyber risk, alright, 3 stages of cyber risk, then I will assess the cyber risk, I will see the impact of cyber risk कि कितना cost जाएगा, what will be the impact, alright, and then I will manage the cyber risk. Now assessing cyber risk means you have to consider threats. Now which threats? उसमें you can give 1 or 2 examples from these attacks and finish it off. Okay. Then impact of cyber risk. This is test your understanding, practical application based question in the module where they say that there is a person who feels that cyber risk का कोई खास impact नहीं आएगा and stuff. So tell them that there can be lots of impact. They have given 7-8 impacts, but I have given 3. RBI, साइबर रिस्क की वजह से रेगुलेटरी कॉस्ट आ सकता है, बिजनेस में इंटरप्शन आ सकता है, योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्टफ कैन बी स्टोलन, and there can be many such impacts. So if you read the test your understanding question, you will get this particular application based question on this impact of cyber risk. All right, where it is very simple, कोई tough application based नहीं है. Managing cyber risk. So entity should implement a cyber risk management process so that they gain a complete understanding of the risk and they can manage their cyber security. Okay. So one more time, for cyber risk, either there can be a question on cyber attack or there can be 3 stages of cyber risk. All right. साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, दिस इज वेरी इजी, खाली फ्लो याद रखो. साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इफ आई वांट टू एंश्योर कि मेरी साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर हो, फर्स्ट आइडेंटिफाई द रिस्क, देन प्रोटेक्ट द रिस्क. सर व्हाट इज प्रोटेक्ट द रिस्क? प्रिवेंटिव कंट्रोल्स. नाउ देयर इज अ रिस्क, ट्रेन योर एम्प्लॉइज, ट्रेन द पीपल, ट्राई टू इंप्लीमेंट प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, पासवर्ड एंड स्टफ, सो दैट प्रोटेक्ट द रिस्क. देन अगर समझो कहीं पे एक्चुअली कुछ एरर्स हो रहे हैं तो डिटेक्ट द रिस्क. And if there is actually, let us say there is a malware or there is a cyber attack, detect that, then respond to it by implementing corrective actions. All right, and then whatever damages जो भी हो गए उसमें से अब recover the risk. All right, so identify the cyber security framework. Remember the question, cyber security framework. Identify the risk, protect the risk, detect the risk, respond to the risk, and recover from the risk. Okay. Control considerations for cyber risk. Now imagine a very big company. Imagine as if आप Amazon या Reliance Industries Limited चला रहे हो. Alright. So for this I have given separate content. What happens is, इतनी बड़ी companies में there are so many vendors and stuff जिसके साथ आप deal करते रहते हो. There are so many suppliers, so many vendors. Okay. Now what if कोई hacker है, attacker है, and what if that particular hacker or attacker वेंडर की जो पेमेंट डिटेल्स है जिसको रिलायंस पे करने वाला है, what if hacker or attacker changes those details, gets access to that particular data, all right, changes the details और खुद का बैंक अकाउंट डिटेल डाल दे तो what if they put their own bank account detail over there? Okay, and that is why
for control considerations for cyber risk. देखो खाली इतना सोचो कंपनी से पैसा बाहर कैसे जाता है, how the company is going, what are the main reasons for cash outflow from the company. One is payment to vendor, so there should be proper IT control over vendor setup and modification. जितना भी suppliers है, there should be a master data for that, who is responsible for changes, all right, how the changes are done, whether changes are authorized or not, there is a standard system for changes or not for vendor data. Just think that how the money flows out of the organization. One is through vendor, so there should be control over there, all right, because attacker will target that. Okay, then दूसरा money flows out of the organization through electronic transfers, all right. So electronic transfers where there should be authorization, there should be system to handle the transfers, or there should be risk awareness. Just think how money flows out of what are the reasons that money flows out of the organization, and you will get this, all right. Then listen to me. Whatever are the application, जितनी भी कंपनी की applications होती है, all right, उसमें upgrades होते हैं, updates होते हैं, all right, that is called as patch management. So whenever there is a patch management, you have to be very careful. कहीं कोई attacker या hacker तो patch manage नहीं कर रहा है. So there should be a patch management program. There should be periodic scanning whether any upgrade is required. All right, and if there is a Microsoft or Windows or external vendor, then whether they are updating their patches or not. Okay. So control considerations for cyber risk, VEP, vendor setup and modification, E for electronic fund transfer, all right, and P for patch management. Okay. Now, remote audit. अरे work from home. I think every article, everyone will understand this. Work from home वाली बात की है उन्होंने इधर. All right, for remote audit. पहले देखते हैं ये खत्म हो गया cyber risk का. Yes, this entire chart is over for cyber risk. Okay. Now, remote audit. What is remote audit? When auditor uses online or electronic means to conduct audit. What are the main considerations for remote audit? First, feasibility planning करो. You know, what will be the audit timelines? Imagine client के साथ बात कर रहे हो. हाँ, remote we are going to audit work from home. Okay. So what are our timelines going to be? Zoom meet, Google meet. All right. Then how we will exchange the data? That feasibility planning. But client and auditor are going to exchange so much of data, especially post-pandemic. This is happening. So protection and confidentiality, security of the data, all of that is required. Protection of confidentiality, security of the protection of data and stuff is required. All right. So encrypting the data sent across the network. Then risk assessment. As an auditor, think whether remote audit will be sufficient. All right. If you think it is not sufficient, then you have to move more ahead and go for physical audit. So considerations for remote audit का code word है plan and protect against risk. Planning, protection of confidentiality, security and data, and risk assessment whether this remote audit will be risky or it will be sufficient. But yeah, advantages and disadvantages of remote audit is a module question. What are the advantages of work from home arrangement? Cost effective, time effective, comfort, flexibility. All right. You can get direct access from the company's system. Disadvantages: network issues, interruption. There is no capacity to visualize the organization. All right, data can be compromised. Yes. Okay. So easily you can write it. They have given 4 मैंने 2 दे दिए यहाँ पे. Then MCQ based question के लिए this emerging technologies in audit and some now the points that you're getting ahead. All right, are very practical. So please ensure that you still stay in the video. Emerging technologies in audit. एक तो डेटा एनालिटिक्स. सिंस years and years काफी सालों से क्वेश्चन आता रहा है. डेटा एनालिटिक्स. व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? ह्यूज लार्ज मास ऑफ डेटा will be analyzed. So generating and preparing meaningful information from raw system data using computer tools. Generating meaningful information from large raw data using computer tools, that is data analytics. And when auditor uses that, then it is audit analytics. Analyzing large set of data for audit purposes. Audit analytics कहाँ पे help करेगा? पाओ में. एक तो पैटर्न समझ में आएगा, कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो. Then if there is something unusual, we can identify it, anomaly. All right. Then it will help us in extracting the data. So audit analytics will help in POW. And जब ये data analytics audit में use होता है तो it is also called as computer assisted audit techniques CAT. Okay. अब ये जो there are some examples that they have given, जो softwares use होते हैं market में, the softwares that are used in the market, उसके कुछ examples दिए उन्होंने. Popular tools used across the industry as part of CATs. All right. So you can see this APAC. Okay, APAC. So let us go through this very quickly. ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. A for ACL. ACL is audit command language. Audit command language software is used for data extraction and analysis of software. Then Power BI. BI stands for business intelligence. एक non technical user को it gives lots of tools to analyze the data. Alteryx. Alteryx क्या देगा आपको? पूरा audit trail देगा start to end. Alright, this particular file start to end कैसे travel हुआ है. So it will help us in developing a proper full audit trail. And Caseware is a software which is nothing but a data analysis software again.
All right. Yes, sir. Yes, sir. So they may ask you to give 1 or 2 examples over here. So data analytics technique, explain with example. So this discussion and 1 example from here is a module question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then listen to me. मार्केट में आजकल काफी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है. So as an auditor, I have to consider the impact of those technologies on audit. This is very interesting if you just stay focused for next few minutes. All right. कौन सी technologies, which technologies have been discussed in the module? Non-fungible tokens, artificial intelligence, blockchain, and Internet of Things. Internet of Things I've already explained you, connecting any device to the internet, cell phone, coffee maker, etc. And this Internet of Things relies on data collection, analysis, and connectivity. Okay. Now, non-fungible tokens. If you see Amitabh Bachchan ki poetry hai Madhushala, so Amitabh Bachchan has actually taken a video of that, and there is one person who owns that video because Amitabh Bachchan has digitally signed it, right, and he has sold it to that particular person. That is called as non-fungible. Non-fungible token means there is a unique owner and it cannot be transferred. Okay, I mean it can be transferred only for a high deal. It is not available in the market for free transfer of data. So non-fungible token means something unique and cannot be replaced. NFT creates digital assets, all right, photos, videos, etc. And NFT basically gives you a token which you can say that, okay, see, I am the owner of this particular digital asset, digital photo, video. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड आजकल सब लोग सुन ही रहे हैं, बट इंग्लिश में लिखोगे कैसे? सिस्टम और मशीन दैट कैन थिंक और लर्न, इट कैन यूटिलाइज डेटा एनालिसिस, एल्गोरिथम्स एंड स्टफ. ओके. ब्लॉकचेन, व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन? यूपीआई यूज करते हो ना? ऑलराइट. सो इन दैट यूपीआई ऐप यू विल सी दैट यू हैव, आपका खुद का एक लेजर दिखता है, यू सी योर ओन लेजर एंड स्टफ. ओके. सो यू हैव इट to the person you have transferred, that particular person also has that particular transaction ka data. All right. Then bank also has the data. UPI app also has the data. Means there are so many participants. All right. तो जो UPI app है वो blockchain में कैसे चलता है? That entire transaction is encrypted. एक flow में arrange किया होता है transaction. I will get the message, you will get the message, bank statement gets updated. All right. So एक decentralization भी है, you have your data, that person has his own data, alright. एक decentralization भी है, and it is completely encrypted. That is blockchain. So look at this. Blockchain is a decentralized or distributed ledger that is secure through encryption. Blockchain में every transaction is validated by blockchain participants, alright. But remember this, it is a decentralized or distributed ledger. Just imagine your UPI or imagine your mutual fund transactions and stuff, then automatically you will understand. Okay, so that is blockchain technology. CDSL depositories uses that blockchain technology. Okay, sir, listen to me very carefully. These 2-3 examples are fine, but main question, yeah, examples explain karna is a part of the main question, but how you will get 5 marks? So they will say that please explain emerging technologies and its impact on audit with 2 examples. Also explain the risk involved and as an auditor what are the points that you need to take care of. अब ये सब में risk क्या involved है? Security risk, common point I'm telling you. Security risk is a common point. Alright. Then as an auditor I have to find out the evidence. Okay. So for that auditor should understand the entire system, software. Okay. ऐसे एक दो common point है. So that little bit I'm expecting that you please write on your own. जो लिख रहे हो ना उसी को understand करके have to finish it off. जैसे artificial intelligence है, auditor should review artificial intelligence, how it affects the entity, cyber security, etc. Alright, and accordingly auditor should plan what kind of evidence will satisfy him and stuff. Auditor should upskill his team. Okay, ऐसा. Now, robotic process automation. There are so many businesses जिन्होंने WhatsApp पे bot use करना शुरू किया है, WhatsApp bots. All right. So today if you book a hotel on Go, IBBO or Make My Trip and stuff, then or IRCTC, I don't know whether they're using bots. So you will get it on your WhatsApp. Okay. That okay, this is the booking. Book My Show does it. All right. That is robotic process automation. Bots, giving the process to bots. All right. Okay. So look at this meaning. Automation of repetitive processes performed by the users. Okay. Basically that bot will reproduce what a human does using digital system. Okay, so automation of repetitive processes performed by the users. जो भी आप IVR वगैरह भी देखते हो, it is also one kind of robotic process automation only. It emulates यानी reproduces human actions interacting with digital systems. What are the risks associated with this RPS? Let me tell you, there is a module application based question. Test your understanding 3 if you see the new syllabus module. Alright, एक particular situation दिया बोला उसमें RPA कैसे help कर सकता है. Alright, so I would recommend that you should read that particular answer. What are the risks associated with RPA? CSO. Once you program the bot, then it is very difficult to change it. And as a management,
आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दैट व्हाई डू यू नीड दैट बॉट, राइट? यू शुड नॉट सेट रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, सो देयर कैन बी स्ट्रेटेजी रिस्क, राइट? एंड इफ यू इंप्लीमेंट द बॉट इन एन इम्प्रॉपर मैनर, अगर आपने गलत तरीके से बॉट इंप्लीमेंट कर दिया तो ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकता है। तो CSO, चेंज मैनेजमेंट रिस्क, स्ट्रेटेजी रिस्क, ऑलराइट, एंड ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क। ओके, ऑडिट इंप्लीकेशंस, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड द RPA प्रोसेस, आई विल हैव टू रिव्यू कि इनका ये बॉट को जो क्रिएट किया उसका सोर्स कोड क्या है एंड वेदर इट इज एक्चुअली अचीविंग द ऑब्जेक्टिव और नॉट। ओके, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट विच इज द लास्ट डिस्कशन ओवर हियर। जो नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट होगा यानी कि जो आप करोगे, इट विल बी ह्यूमन लेड, टेक पावर्ड एंड डेटा ड्रिवन। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी व्हाट दे आर डिस्कसिंग। मैड वर्चुअल, दे आर बेसिकली डिस्कसिंग कि अभी आगे और टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन। ऑलराइट, इट इज बियॉन्ड जेन जी ऑल्सो, नेक्स्ट जेन। ओके, सो कम ऑन, ड्रोन तो सबको पता है, फोटो वेडिंग एंड एवरीवेयर यू वुड हैव यूज्ड इट। ड्रोन टेक्नोलॉजी, हाउ ऑडिटर कैन यूज इट, हाउ ऑडिटर कैन यूज इट फॉर स्टॉक काउंट एंड स्टफ। ओके, then they are just explaining, इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। वर्चुअल रियलिटी, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? आई नीड इंग्लिश। Replacing real world entirely with a simulated world. All right, so you have this imaginary world, that world will replace the real world. What is augmented reality? Pokemon Go, अगर आपको ऐप पता है, गेम पता है, तो that is augmented reality, where there is a real time world, real world, plus उसमें आप एक imaginary चीज कर रहे हो. So you are not completely replacing the real world. If you are completely replacing the real world with a simulated environment, that is virtual reality. All right. Augmented reality is Pokemon Go, real world plus augmented added elements. And metaverse. What is this metaverse? Metaverse. आप augmented reality, virtual reality, everything mixed together, एक पूरी अलग ही digital world बनाना. So today let us say, I will enter into a digital space. एक imagine करो एक studio 3D space है, all right. I will enter into that space. I will have all the devices. I'll create a different world. There I will be known as, instead of Pragnesh, let us say I'll be known as Praggy over there. All right. I'll have a separate economy. I'll have a separate land building over there. Okay. So इसको कहते हैं metaverse. So 3D digital space, virtual reality plus augmented reality, everything to allow people have life-like personal and business experiences online. Some important considerations for future. ये अगर metaverse अगर बन रहा है, then in that case there has to be separate digital economy, digital monetary systems. उसमें गवर्नेंस मॉडल होने पड़ेंगे, एंड उसमें आइडेंटिटी इश्यूज हो सकते हैं. सो हाउ टू बिल्ड डिजिटल मॉनेटरी सिस्टम्स, हाउ टू क्रिएट गवर्नेंस मॉडल्स, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई रियल आइडेंटिटी. देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू दिस नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ मॉड्यूल क्वेश्चन. ये एम फॉर मेटावर्स नहीं, एम फॉर मॉड्यूल क्वेश्चन है. ऑलराइट, एंड दीज 3 points will give you your 3 marks, and 2 points over from here, 2 examples will give you your 5 marks. All right, so that is it with respect to digital auditing and assurance. If you have completed the entire video, then please comment, I have completed it. All right, and please share this with your friends, and it will really help them to move ahead. All right, all the very best. I hope that I really see you as a chartered accountant when we meet next.